And let me tell Sudhaji, before formally starting and before formally welcoming Sudhaji, we have amidst us Sangeeta Gupta ji joining us from Jaipur, the daughter of legendary Madan Mohan ji. Oh, okay. Hi, okay, And, that's good. Sangeeta ji, before we formally start, would you like to kindly say a word to Sudhaji? I've requested you to unmute yourself, Sangeeta ji. Hi, Sangeeta. Mute. Yeah. Yes. नमस्ते सुधा आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मेरा तो बचपन आपके घर में गुजरा है, ये आपको पता है। और मैं जब भी मम्मी डैडी से लड़ाई कर लेती थी तो मैं फ्रॉक लेके कहती थी मैं नानक निवास जा रही हूँ। और सारी पुरानी यादें हैं और गिद्दू भैया की भी यादें हैं, आपकी भी यादें हैं। और आप कैसी हैं? बस ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा। Wonderful, wonderful to see you looking as glamorous and as beautiful as ever. Thanks. Sangeeta ji, namaskar. And the same I was saying to Sudha ji that you're looking gorgeous, and I would be asking her the secret to her defying age and how does she keep so upbeat. Love of my, all my fans who love me so much and send me such good wishes. That's amazing. Amazing. Thank you, Sangeeta ji, for joining. Look forward to a wonderful evening today. And Sudha ji, Rajiv ji with Sangeeta ji is also joining from Jaipur, so he's also there, and both of them have been very lovingly patronizing our show every week. So we are privileged to have both of them. And thanks, and wonderful that you have such memories together. Well, you have to have memories. That's all you can live by at this age, advancing age. You can think of beautiful past. So I think having given the Indian stretchable time quotient to everybody, and I think we are having a good quorum now. And formally, I would love to begin. I'm just saying that so that Sudhaji knows, and I'll request my team to be ready to start the. So we will also be going live on Facebook with this. So let me start. I'll be giving the mic to you, Sudhaji, in a moment. That's. We all on behalf of MINDZen, and I on behalf of all of our participants and the entire family of MINDZen and Amulya Virasat, we welcome our guest of honor this evening, Sudha Malhotra ji. It's a privilege to have you on the show. हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं, और ये दिन आसानी से आता नहीं है किसी के जीवन में, हमारे जीवन में आया है। तो आइए आज इस दिन का भरपूर आनंद उठाएं, इसको जी भर के जिएं, और इसमें से जो हम ग्रहण कर सकते हैं वो हम ग्रहण करें। आज क्या हाल है या रब सरे महफिल मेरा, आज क्या हाल है या रब सरे महफिल मेरा, कि निकाले लिए जाता है कोई दिल मेरा। जिगर ने ऐसा कहा था, और वाकई में आज की शाम कुछ ऐसी शाम है। और वी वेलकम ऑल ऑफ यू who've joined us so lovingly on Zoom, and we welcome all of you who are joining us on Facebook and live streaming on Facebook and live streaming on other channels, and also who will be viewing this recorded program later on our YouTube channel. We welcome you to Amulya Talks under the aegis of Amulya MINDZen. This is a conversational forum where we would be inviting legends and achievers, and let's learn from their journey.
आई जब उनकी याद तो आती चली गई. सुधा जी was just now mentioning when she was talking to Sangeeta Gupta ji, the daughter of legendary Madan Mohan ji. यादें ही तो हैं, memories what we all cherish. आई जब उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे सिवा को मिटाती चली गई, हर मंजरे जमाल दिखाती चली गई, जैसे उन्हीं को सामने लाती चली गई. सो इसको ऐसे देखिए कि ये सब हमारी तमन्नाएं हो सकती हैं और आज सुधा जी हमारे साथ हैं. हर वाकया करीब तर आता चला गया, हर शय हसीन तर नजर आती चली गई, वीरानी हयात के एक एक गोशे में जोगन कोई सितार बजाती चली गई, दीपक को मेघहार बनाती चली गई, रग रग में नगमा बन के समाती चली गई. जितना ही कुछ सुकून सा आता चला गया, उतना ही बेकरार बनाती चली गई, बेकैफियों को होश सा आता चला गया, कैफियतों को नींद सी लाती चली गई. आई जब उनकी याद तो आती चली गई. तो सुधा जी, आपको हमने इतना याद किया है और आज उसकी पूर्णता का दिन है. थिंग्स हैव कम अ फुल सर्कल एंड आई had actually never imagined that we would have you on our show. So it's for being a privilege having you here. And thank you so much. I'm really quite amazed and happy to see so much excitement and so much, what should I say, your enthusiasm for this sort of a show. And you're thinking of all the पुराने poets के और कविताएं और शायरी सबको encourage करने के लिए artists को बुला रहे हैं आप. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. और that was one of the reasons I agreed, because I'm not very good with Zoom talking. I'm not very familiar with Zoom. And but still, this is something which I can get to everybody and everybody can get to me. So I'm very, very happy and thank you so much for making this effort. It's a privilege, ma'am, and we are grateful, deeply, deeply grateful. I, on behalf of all our friends and audience and the family of Amulya Virasat and Amulya MINDZen who are gathered here, we are thankful to you for making this effort, for sparing out time and being with us and honoring us with this presence of yours. जैसा ये जो मैंने आपको अभी शेर सुनाए थे, ये जिगर मुरादाबादी साहब की गजल से थे. और जैसा साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत खूबसूरत कहा था कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम. तो उसी नजर को, उसी नजरिए को और हसीन बनाने के लिए, उसको गहराई बख्शने के लिए और अपने इस दिल में कुछ और प्यारे एहसास जगाने के लिए ये एक कोशिश है अमूल्य विरासत और अमूल्य माइंडज़न की तरफ से. बहुत बहुत शुक्रिया. और जैसा मैं हर बार एक निवेदन करता हूँ कि हर शक्ल का रूप नहीं होता, हर रूप को नाम नहीं देते, कुछ शक्लें हैं मन की आंखों में, कुछ रूप है मन के दर्पण में. कुछ मन के अजंता में आओ, कभी मन के अजंता में आओ, वो मूरतें तुमको दिखलाएं, वो सूरतें तुमको दिखलाएं, हम खो गए जिनके दर्शन में. तो इस मन के अजंता में आप चले आते हैं और आज हम जिस सूरत से मिलना चाह रहे हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी को अपनी आवाज से, अपनी प्रेजेंस से इतना हसीन बनाया ओवर द लास्ट सो मेनी डिकेड्स. आज हमारे बीच में इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है. तो सुधा जी, आई विल रिक्वेस्ट you that let's begin maybe from the beginning only and उस दौर में, उस वक्त में हमें ले चलिए जब आप 6 साल की भी नहीं हुई थी और ये जो आपके भीतर ये पैशन, ये प्रेम
ये कहाँ से, ये कैसे पैदा हुआ? मैं आपको संगीत बताऊं, ये मैंने बहुत बहुत दफा इंटरव्यूज दी हैं और सबको बताया कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस, न्यू थिंग्स कम इन माय माइंड, सो आई डोंट हैव टू रिपीट एवरीथिंग। तो स्टार्ट तो बचपन से ही हुआ। मेरे पेरेंट्स ने शायद कुछ मेरे में देखा, तो उनको भी शौक था गाने का। और पहली बात जो मेरी माँ ने मुझे बताई कि मैं 3 साल की थी तो एक फिल्म देखने गए थे लाहौर में। वहां पर कोई पिक्चर में कोई गा रहा था, तो मैंने जोर से चिल्ला, ये तो बेसुरा गा रही है। So maybe I was 3 or 4 years old. I don't remember. क्या बात? And that was something that she told me again and again कि स्वर का थोड़ा सा ज्ञान बचपन में भगवान ने दिया मुझे, शायद इसलिए मुझे लगा कि एक थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर जमाने में सिंगर्स नहीं हुआ करते थे, जो एक्ट्रेसेस थी खुद गाती थी, तो शायद मेरे को कुछ लगा, स्वर ठीक नहीं लगा। Anyway, that was just the start. And do you want me to go ahead? That's a wonderful incident that at the age of 3 in the movie hall, in the cinema hall, you are openly declaring कि ये तो बेसुरा गा रही है। It's स्वर में नहीं गा रही, पता नहीं, maybe I was 4 or 3, I don't exactly how old. That's wonderful. So that's, मतलब मैं तो यही कहूँगा, जैसा हम मोजार्ट के बारे में सुनते हैं, that at the age of 5 he composed his first symphony, and then so you've been a prodigy, I would say, and I humbly tell you the same thing, that one has to start at a very young little age. That's how you promote yourself, and it has to be God gifted. I mean, God gifted, and मैंने बाद में तो है ही, भगवान ने कुछ आशीर्वाद दे के बड़ा करने के लिए कहा, चलो रियाज करो और करो. So I started my life in Lahore, right, with the All India Radio, मतलब in singing. Concerts में किया. Concert में मैं आपको बताऊंगी, एक बहुत बड़ी concert थी फिरोजपुर में. हाँ, उस घटना, उस इंसिडेंट के पास मैं जरूर चाहूंगा आप हमें ले चलें. आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट, अ watershed moment in your life. Well, there's so many turning points I can't remember. But at that young age of 6, I would say. Yes, that's right. They put a table and placed me on that because I was too short to sit on, and the orchestra behind me, so nobody could see me. Audience, बहुत बड़ी audience थी, तो वहाँ मैंने गाया. तो उनके गुलाम हैदर साहब ने कहा कि ये लड़की तो आगे जाके बहुत अच्छा गाएगी. तो उसकी फोटोज वगैरह सब मेरे पेरेंट्स ने रखी संभाल के. But I think one of my fans brought it out from somewhere, because पाकिस्तान में फिर हम लोग का सब इधर उधर हो गया था. लाहौर से हम दिल्ली आ गए थे, और तो कहाँ से वो मुझे इतनी खुशी हुई, वो फोटोग्राफ मिल गई, और उसमें दिखा रही मैं बैठी हूँ रिंग लेंस के साथ और गा रही हूँ, पता नहीं कौन सा गाना, बुलबुलों मत रो यहाँ या कुछ और, याद नहीं. नूरजहां was my favorite those days. So that's how it started. Wonderful. So Sudha ji, do you actually remember that moment, or it has been told to you and you recollect it from the photographs and those things? I do remember vaguely. I can remember open air theater with hundreds and hundreds of people and orchestra behind me, and I'm singing. And you're singing तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा. पता नहीं, हाँ शायद यही गाया था, मुझे याद ही नहीं है, लेकिन गाया नूरजहां खानदान फिल्म से. Yeah, that's right. क्या बात है. Even like I'm getting goosebumps even imagining. Like, even I'm getting goosebumps. It's so wonderful. A child at the age of 6, it's amazing. It's amazing. I started at that age, but have you noticed most of the artists have started at a young age? That's how it starts. मैं आप सबके लिए, अपने जितने भी यहाँ कदरदान हैं, सुधा जी के चाहने वाले हैं, हालांकि वो बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स आप सबको ये मैं जिक्र कर दूं, ये अर्ज कर दूं कि सुधा जी was born in Delhi, if I'm right, Sudha ji? I was born in Delhi, yes. Delhi, right. We were in Lahore before partition. Right, 1936 would be, 1936. 1936 would be your... I'm not going to give you I will not give you my age. I take it back. Let you all guess. I'm going to let you all guess my age. So, I hate to think that I'm
going the other way so fast. So I just want to be concentrated. That would be one of my very humble and loving questions to you. That how do you keep yourself so upbeat and the joie de vivre which you carry? I keep myself. I'm a very selfish person. People love me so much, and they send me such nice, in the WhatsApp and everything, my songs, and their love for me. That keeps me going. I mean, if I'm just left without that, I'm sure I'll be 10 years older, looking 10 years older. It's a love of people. Kya baat hai. So I think this is something we need to learn from you. We need to learn from you. At that, I think even at such chronologically such young ages, we all tend to treat life as a burden, and we all are bogged down by such unknown and insignificant burdens. I really don't know. Well, it happens to everybody. Then you get very delighted when people love you and they come out with things that you have forgotten about yourself. It's so nice that you value all this, and this makes me recall Firag Gorakhpuri at this moment, and he said it beautifully, and I dedicate it to you. हम वक्त के सीने में एक शम्मा जला जाए, हम वक्त के सीने में एक शम्मा जला जाए, सोई हुई राहों के जर्रों को जगा जाए, सोई हुई राहों के जर्रों को जगा जाए, कुछ रंग उड़ा जाए, कुछ रंग जमा जाए, कुछ रंग उड़ा जाए, कुछ रंग जमा जाए, इस दश्त को नगमों से गुलजार बना जाए, इस दश्त को नगमों से गुलजार बना जाए, जिस सिमत से गुजरे हम कुछ फूल खिला जाए, वाह, जिस सिमत से गुजरे हम, जिस ओर से गुजरे हम कुछ फूल खिला जाए. So I see you living this as a life philosophy, and you're very kind. It's amazing. Anyway, I'm so happy. Really amazing. It's nice. All these things. Thank you, ma'am. And so, Sudhaji, going back the memory lane, and so your parents were so supportive and they wanted you to be in this, and then आप ने तालीम उतने बचपन से ही विधिवत रूप से लेनी शुरू कर दी शास्त्रीय संगीत की, which shows in your right. Different teachers, because I kept shifting from Lahore to Delhi, Delhi to Bhopal, Bhopal to Bombay. So So in the initial period when you were in Lahore prior to partition, and then when you shifted to Delhi, आपको अपने जो गुरु रहे, उस्ताद रहे, उनके साथ के कुछ anecdotes, कोई खास बात? नहीं, उस टाइम में तो फिर वो लोग बिखर गए थे ना, कौन कहाँ गया, कौन चला गया. Right. But actually सबसे अच्छी मेरी जो तालीम मिली है वो बॉम्बे में आके मिली थी. अच्छा, बॉम्बे में. क्या बात है. So, and you after Delhi you moved over to Bhopal. Bhopal. Bhopal was not that musical a place to that extent. So I came to Bombay. In the sense I came to Bombay because I had my grandparents staying here, और मुझे फिर मेरे को अनिल विश्वास जी के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया. That's how I started my career in films. That would be 1950. About, yes. About Arzu. That's right. Majroor Sultanpuri Sahab and Anil Biswas Sahab. Yeah, that was my first song. Kya baat hai. Would you like to recall that song, something of that? Kuch not really. I only remember Anilda playing the piano, and I'm sitting next to him getting very nervous. And Anilda was a hard taskmaster? Absolutely, very hard taskmaster. No nonsense? No nonsense. But the very fact that he went through my song and liked it, I mean, that was a big pleasure for me. Kya baat hai. जिनको जिया तरसे चुपके चुपके, हाँ, मिला गए नैन. क्या बात है. So for friends, this what Sudhaji is referring to is 1950. आरजू नाम की फिल्म है, अनिल विश्वास दादा का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी साहब की शायरी है, and that would be the beginning of Bollywood singing career of Sudhaji. That's Thank you, ma'am. Then I stopped. I went back to Bhopal to study. Right. I studied in
studying, and then I was called back. I mean, the news was spreading around. There's a new talent coming into the line, or talent, or whatever they called it. So I was called back. मैं अंग्रेजी ज़्यादा तो नहीं बोल रही, हिंदी में. नहीं मैम, perfect. You can like switch over to any language, Hindi and English. That's perfectly fine. से मैं फिर बॉम्बे पीएन अरोरा जी ने बुलाया, और गुलाम मोहम्मद जी के म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उनकी पिक्चर्स में गाए मैंने कुछ गाने. So then which means you are now kind of taking us to Mirza Ghalib 1954. Much before that. Yeah. अच्छा, तो उससे पहले फिर 51, 53 में भी जो फिल्में आई हैं. हाँ, गौहर पिक्चर थी. गौहर थी, जी जी जी. आवाज दे रहा है कोई. That's right. क्या बात है. I was just telling. Yeah, that's अगर आपका कभी भी किसी भी गीत को गुनगुनाने का मन हो, even without the harmonium या with the harmonium, please. I don't want my fans to get so disappointed. Right now, my voice is the lowest ebb I can think of. नहीं, क्योंकि गुलाम मोहम्मद साहब का वो मीठा गूंजता हुआ संगीत हो, और अगर आप चाहे तो जैसे आपकी इच्छा. Many more after that. That's right. और आवाज दे रहा है कोई आसमान से, आजा मेरे जहान में अपने जहान से. क्या बात. I'm sorry that. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अरे आपने हमें नवाज दिया, इतनी खूबसूरत जो नगमगी है, और उसको ऐसी मौसीकी मिली है. और इसी वक्त एक और बहुत प्यारा गीत भी आया, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो यार. तलत and Jagjit, myself. I think 3 of us sang that song. Isn't that so? Yeah. हम तीन ने गाया. आप तीनों ने गाया. जी. तलत और जगजीत. Yeah. आप तीनों ने गाया. ऐसे तो बहुत गाने हैं, याद दिलाते रहते, मुझे तो याद ही नहीं रहते. Melody used to rule in that era. Absolutely. क्या बात है, कितनी मिठास. And immense. It was not that you could just sing one word and उसको join कर दिया. एक दफा गाओ, एक गलती है तो शुरू से सारा गाने गाने पड़ते. Whether it was me or musicians or whatever. बहुत मेहनत करके गाना पड़ता था हम लोग को. जी. आजकल तो सब कुछ मोल्ड हो जाता है, वॉइस चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, and we just have to sing one line and then carry on, you know. उस जमाने में सब नहीं था. हम लोग रिकॉर्ड करते थे फिल्म लाइन के लिए, फिर एचएमए में जाके दोबारा रिकॉर्ड करते थे सेम सॉन्ग. It was that hard. Very excellent, but very lot of work. Nida Fazli has said it beautifully, summed it up in a doha. Sa se sa tak सात सुर, sa se sa tak सात सुर, सात सुरों में राग, उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग, उतना ही संगीत जितनी तुझ में आग. तो ये जो हमारे भीतर की एक जुनून वाली आग है, ये पैशन है, यही शायद इस सबको असर, आवाज को असर देती. और तो सुधा जी, if we move ahead in that era, that beginning period which was early 50s, and कुछ जैसे आपने गुलाम मोहम्मद साहब का नाम लिया, तो मुझे तो मिर्जा गालिब याद आ रही है, गंगा की रेती पे, और क्या मीठा वो कंपोजिशन है, और कितना उसका असर, मतलब आज भी, हालांकि वो मिर्जा गालिब की शायरी नहीं है, शकील बदायूनी इज बिहाइंड इट, बट वो क्या उसमें कितनी मिठास है, and it just actually catches you by the throat and by the heart. Right. You can't come out of the magic. But you know, so funny, because I was so young and I started, so I wasn't really appreciating so much of what you're saying now, which is sounding beautiful, the words and the lyrics and the music. हम गाते थे, मेहनत करके गाते थे और चले जाते थे, फिर सोचते भी नहीं थे क्या गाया इसके बाद. And then of course, as my improvement in my voice and my everything that came in later, जब हुसनलाल भगतराम जी से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने इसमें से कहा कि आप ये पटियाला घराना, पंजाब घराना के उस्ताद से सीखो, it will come in handy for you in your career, and which is so true. मेरे पास एक उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब
ने सिखाया मुझे, क्या बात उनसे मुझे बहुत बहुत ही अच्छा गाने का तरीका सीखा उनसे, और रियाज किया 6-6 घंटे 7-7 घंटे, बहुत रियाज किया, बहुत मेहनत करी उस जमाने में, उससे मुझे फायदा हुआ बहुत। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता था, आपने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया कि रियाज से आपका कितना लगाव था, कितना आप रियाज करती थी, तो 6-7 घंटे तो आसान बात नहीं है। नहीं, करना पड़ता था, और जब रिकॉर्डिंग होती थी तो सुबह 7 से 9 तक रियाज किया, और उसके बाद तैयार होकर रिकॉर्डिंग करने चले गए। कभी तो दिन में 2 रिकॉर्डिंग्स होती थी। पता नहीं, एज, एंथुसियाज्म, ये सब काउंट करता है। When I think about it, कैसे किया मैंने पता नहीं। That's wonderful. Before I move ahead, I would like to welcome once again everybody, all our friends, all our audience who have joined us, and I would especially like to take the name of Sabira Merchant ji. Ma'am, thanks for joining. I believe. Hi, Sabi. Yes. So I would request Sabira ji to unmute herself and kindly say a couple of words. It's a privilege, ma'am, having you on the show. Thank you so much. You've been so kind. It was such an excellent show. I really enjoyed listening to it. And Sudha, of course, is our dear friend. So I'm so happy to see her blooming here on screen. Wow. I think you've said it. And who's talking? She's a master in whatever she does. And I would say that the same holds true for you, Sabira ji. And we as youngsters have grown up idolizing you, and that's yes. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Personal privilege for me. Thank you, Sabi. Thank you. Thank you. Yeah. And once we formally end this then we'll definitely we'll be going into the open house, and if Sudhaji kindly permits some more time, then I think we'll all interact, and that'll be a wonderful time. And for that time, I would request friends, because today we've changed some settings with this new format of the show. So you are your mic is on mute, but then the chat box is open. And if you're having any questions, if you have any particular question for Sudhaji, kindly send it to us. That will reach us as the coordinators and the presenters of the show. And the questions which are like worthwhile, we would moderate them and ask Sudhaji on your behalf, and maybe in the later part. So that's how we will progress. I welcome everybody else who joined us here and on Zoom and also on Facebook. So Sudhaji, you mentioned Ghulam Muhammad Saab, you mentioned Anil Da, and then you mentioned Husn Lal Bhagat Ram ji, and who are the who were the other music directors? Roshan ji, Jaydev ji, क्या बात? S.D. Burman, and I can't. Practically all. When you say C. Ramchandra, O.P. Nair, everybody. So when you mention S.D. Burman, एक भजन कहें, उसे गीत कहें, वो मेरी रूह के बहुत करीब है, आत्मा से उसकी गूंज उठती है. ना मैं धन चाहूं, ना रतन चाहूं. क्या बात. A beautiful bhajan. What a divine composition it is. And no doubt. आप की आवाज सच में हमें उस दुनिया में ले जाती है जो इस दुनियादारी से बहुत बियॉन्ड है. बहुत अच्छा, I mean, दिल से गाया हुआ था. गीता जी ने और आपने बहुत अच्छा भजन है वो. एक और भजन मैंने गाया था जो नाम हेमंत कुमार जी का, रवि का म्यूजिक था कि हेमंत, कंफ्यूज. दर्शन दो घनश्याम, अखियां प्यासी. भजन तो आपने नॉन फिल्मी भी कितने अच्छे, गजल भी कितनी. That's been a privilege. Not today, because today I would request everybody, I would inform and I would request Sudhaji that we'll be focusing on the journey, the life and the career and the journey of Sudhaji, so that we all can get to know so much about her, and then हम में से जो भी उसमें से कुछ सीखना चाहें, हम वो lessons भी ले सकें. And then maybe we request you to join us in another subsequent program whenever it's convenient to you. And then I would say that we focus on your non-filmy repertoire, the genre. Why don't you all start learning on Zoom from me? I'll teach you. How's that?
क्या बात है. So that's a wonderful I thing. am game for that because अभी कोविड का तो कुछ ठिकाना नहीं, क्या हो रहा है मालूम नहीं क्या हो रहा है. I'll start teaching one by one. जिसको सीखना है most welcome. तो फिर ऐसा करें कि आप सब ने सुधा जी का जो ये प्यार भरा chat box, and we'll all compile those requests. We'll compile those requests and we'll share with Shivani ji, who's been instrumental. Because of her, this program is happening. So I must introduce Shivani. You all know her. She has most of our good amount of time with me with singing, and she's very inspires me a lot because I tend to go slow. She says no, she gives me courage, and she's a good singer. So she's doing very well. So thank you, Shivani. We're grateful to you, and this privileged moment has been possible because of her diligent effort and her vision, and she's helped me and our entire team so much. And right now she's there with you, pre-event also, setting up everything. And I wouldn't have been able to do it on my own, I can assure you. So, ma'am, before we move ahead on the track, which is the Bollywood career, any anecdotes of that early era when during recordings or during rehearsals, anything in particular you would like to share? I can only share that I did a lot of hard work, and that really pays for anybody who's listening and who's interested in music or any field of sports and music. They all know गाने में रियाज तो बहुत चाहिए. आज देखिए कितने अच्छा गा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, और they've got the advantage of television जो हमें नहीं था. तो हम तो अपनी मेहनत से अपने आप को सब जगह अपना गाते थे और बताते थे कि क्या गा रहे हैं, good or bad. But what is required is a lot of hard work and hard work. That's what I can say. And of course, God's gift of voice. So wonderful that you bring it to God's gift also, because hard work, you repeat it. Everybody wants to do that, but I think we all need some deeper grounding, maybe at the spiritual level, maybe at the beyond this body mind complex. So what has been your journey on that path? It's just God's gift. I can't say more than that. I mean, born with natural voice. Everybody doesn't have that gift God gives to some people. And I'm so grateful to God. And I thank God all the time. He's given me whatever I've achieved today. I think the best and the purest prayer we can offer is gratitude. Yeah, that's true. मैं फिर से एक बार अपने दिल के बहुत करीब जो उस्ताद शायर हैं जिगर मुरादाबादी, I'd like to share a couplet by him which for me is the definition of gratitude. थोड़ा सा इसको मुझे अपने सारे ऑडियंस के लिए elaborate करना होगा. तो अर्ज है, न होश हस्ती न ताबे मस्ती के शुक्र नेमत अता करेंगे. इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि हस्ती का तो होश नहीं है, हस्ती में इतनी मौज है और या इतना सब कुछ मिला हुआ है, और मस्ती की ताब नहीं ला पा रहे. मस्ती इतनी है कि वी आर अनएबल टू कंटेन इट, द एंजॉयमेंट, द आनंद, कि शुक्र नेमत अता करेंगे. इतना कुछ मिला हुआ है कि उन नेमतों का शुक्रिया अता करें. ये इसके लिए ना हम होश में हैं क्योंकि इतना कुछ मिला हुआ है, ना ताब ला पा रहे हैं, न होश हस्ती. एंड देन इन द सेकंड कपलेट, दूसरे मिसरे में जिगर देखिएगा, he'll turn the table and he'll turn the game, he'll change the game entirely. न होश हस्ती न ताबे मस्ती के शुक्र नेमत अता करेंगे. खिजा में जब है ये अपना आलम, खिजा में जब है ये अपना आलम, बाहर आई तो क्या करेंगे. कि अगर ये पतझड़ में हमारा ये आलम है कि हम इतने आभारी हैं, तो बाहर आई तो क्या करेंगे. खिजा में जब है ये अपना आलम, बाहर आई तो क्या करेंगे. तो ये भी एक अंदाज है जीने का. एंड वंडरफुल दैट यू आर अगेन एंड अगेन impressing on that, and you are living it, which just shows. So ma'am, may I ask you about the
the fellow singers, your contemporaries, and any anecdotes, any memories, special memories with them? I'm afraid not, because they were all very, very loving to me. Whether it was Talat ji, Manada, Rafi ji, this is the male singers, Right. SD Batish, because we sang a Qawwali together. Qawwali, yeah. I think SD Batish साहब के साथ आपने एक बार और भी 2 बार गाया है शायद. जी. You're right. I think you remember more than I remember. बच्चे कव्वाली के लिए मैं बताती हूँ आपको. मैम वो मनमोहन मन में हो तुम ही में SD Batish साहब भी थे क्या? Remember? हाँ, right. But if you want to know about this कव्वाली बरसात की रात में, please. वो बहुत टाइम लगा उस कव्वाली में. सुबह से स्टार्ट करके अगले दिन तक सुबह तक हम लोग गाते रहे, और अलग अलग आर्टिस्ट का था ना उसमें 5-6 आर्टिस्ट. बिल्कुल. आशा जी भी हैं और रफी साहब भी हैं और SD Batish, Manada, राइट, रफी साहब, हम लोग सबने गाया. बट ऐसा कभी नहीं मैंने किया कि सुबह से अगले सुबह तक गाती रहे हम लोग. बट ऑफ कोर्स our turn, we got rest in between. और मैम जब ये इस तरह की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो अब बरसात की रात तो फिल्म है, उसके पीछे जो विजनरीज हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, और फिर संगीत बनाने में जो और लोगों का हाथ है, म्यूजिशियंस तो वहाँ हैं, शायर जो हैं, लिरिसिस्ट हैं, ये सब लोग भी क्या वहाँ होते थे रिकॉर्डिंग के वक्त? They had to be. उनके बिना कैसे चलता? रोशन जी का होना जरूरी था. रोशन जी तो होंगे ही, वो तो लाजमी है. साहिर साहब का होना जरूरी था. वर्ड कहीं गलत बोल दो, कुछ क्या बात. तो अगर कुछ भी तलफ्फुज में या कहीं कोई गलती हो रही है तो साहिर साहब करेक्ट करेंगे? मेरी तो कभी हुई नहीं गलती. क्या बात है. सच बोल रही. मेरी उर्दू तो इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम था वाह काम करना चाहिए. क्या बात. कबूल कर लो, कबूल कर लो, तो कुछ था दिमाग में, तो बोल लेती थी ठीक ही बोल. बहुत खूब. तो ये जो आप बता रही सुबह से रात तक रिकॉर्डिंग चल रही है और जिनका हिस्सा गाया जा रहा है वो गा रहे हैं, बाकी वेट कर रहे हैं, तो क्या कमाल का माहौल होता होगा उस वक्त. I can't even tell you how beautiful it was. Oh wow. Music all round, and it was lovely. बहुत ही अच्छा. And everybody is so excited. Yeah. Because I think we are recording. गाने का तरीका अलग था ना. तो क्या बात. I had one of the best कव्वालीज. I don't think one of the best. I think that's रोशन साहब ने, साहिर साहब ने, आपने सबने मिलके हमें जो ये एक नगीना दिया है, we all owe it to you all. I think इसका कोई मुकाबला ही नहीं है. कोई मुकाबला नहीं, ना उससे पहले ना उसके बाद. ऐसा यूनिक काम नहीं आसानी से. I was lucky. बहुत That's great. And और कोई इस रिकॉर्डिंग के अलावा और कोई वाकये अपने साथियों के साथ? जी म्यूजिक जी, जैसे कि ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, was originally sung by me. This you won't know. You have never heard of this. It was originally sung by me and Geeta Roy. Chetan Anand. Yeah, ओके. तो मैम ये ओरिजिनली भी इसका ओरिजिनल वर्जन यही था या तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं? अच्छा, तो वो जो तलखियां में तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं उसको मॉडिफाई कर दिया गया था. साहिर साहब ने उसको फिल्मों के लिए लिख दिया. मुझे सब नहीं मालूम है. मुझे यही मालूम कि हमने गाया था, गीता ने और मैंने गाया था, और ये चेतन आनंद की पिक्चर के लिए गाया था. वो पिक्चर नहीं बनी, आधे में रह गई. Then I had already got married and I had stopped singing in the film line. So unfortunately for me, I couldn't this song again. Otherwise, we would have this immortal gem in your in your voice. Yes, it's not many people know about this. Oh, so wonderful. And I tried to get the copy, but वो नहीं हुआ, कुछ रह गया सब कुछ. और कुछ मैम इस गीत के साथ और भी कुछ यादें आपकी जुड़ी हैं? एक तो ये कि आपने कहा रिकॉर्डिंग, मतलब ओरिजिनल रिकॉर्डिंग आपके साथ. इसके साथ तो कुछ नहीं, बट गाना बहुत so beautiful.
It was so beautiful and very easy to sing. It was not a बहुत मुर्किया मुर्किया कुछ नहीं था, सीधा सीधा गाना था, पर शायरी उसको कमाल की थी। और उसके बाद हम लोगों ने गाया और वो रिकॉर्डिंग हो गया था, सब हो गया था। गीता भी चली गई और मैं उधर चली गई। बहुत बहुत जल्दी आप दोनों के हम म्यूजिकल करियर्स को फिर मिस करना शुरू कर देते। आई थिंक 60s में फिर हम आप दोनों को ही मिस करते हैं। तो आई डिड, उसके बाद मैंने गाया था राज कपूर की पिक्चर जी, में, प्रेम रोग में आपने गाया। जी जी। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कमिंग बैक एंड सिंगिंग फॉर लक्ष्मीकांत? दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। राज जी ने मुझे सुना लोनावला में, मैंने जगजीत सिंह जी के लिए गजलें कुछ बनाई थी HMV के लिए। अच्छा। और वो गजल मैंने उनको सुनाई राज जी को। वो तो पागल ही हो गए, बोलते तो मैं गाना पड़ेगा मेरे लिए। You know, Raji was a very musical minded person. He was very talented in music. He knew exactly क्या क्या सुनना है, क्या अच्छा है क्या नहीं। So एक दिन उन्होंने फोन किया, तब तक मैंने बंद कर दिया था फिल्म लाइन में गाना। तो my husband was very fond of Raj Kapoor also. We were like not very friendly, but he was, of course, as an actor, he was marvelous. तो फोन किया, सुधा तुम मेरे लिए गाना गाओ, गजल है, कुछ है, गाना पड़ेगा। मैंने कहा राजी, माय हस्बैंड इज ट्रैवलिंग, तो मैंने कहा मैं पूछ के बताती हूँ इधर अमेरिका। जी। तो उन्होंने कहा एनीथिंग फॉर राज कपूर, यू कैन डू, सिंग फॉर हिम, आई डोंट माइंड एट ऑल। ही नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम सिंगिंग, ही सेड प्लीज गाओ। तो राज जी नेक्स्ट डे एम्बेसडर कार में सफेद कपड़े पहन के अपने आगे, चलो सुधा चलो चलो गाएंगे। लक्ष्मीकांत जी के घर गए, जाके हमने रिहर्सल करी। और फिर जब, आई मस्ट टेल यू, आई वाज वेरी नर्वस, लेकिन इतने गैप के बाद मैं गा रही थी। 100 म्यूजिशियंस थे मेरे सब पीछे लगे। इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ, वो हम सब बड़ा ऑर्केस्ट्रा, वी वर नॉट डबिंग थिंग्स, इट्स ऑल देयर, दे वर ऑल देयर। उनके साथ गाना, तो इट वाज क्वाइट एन difficult task for me, but I think it was a wonderful song. Beautiful. And Lakshmikant Pyarelal would be younger to the other musicians course, which you worked with. So how was it like working with them and singing for them? Well, actually Lakshmi ji और प्यारेलाल जी ने मेरे साथ पहले जब मैं गाती थी, लक्ष्मी जी मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल जी वायलिन बजाते थे। एसडी बर्मन जी के साथ या और नहीं, मतलब कहीं भी वो बजाते थे। So it was such a nice feeling to see them coming up like this beautifully, and I'm singing this song. बहुत ही अच्छा था। And ये राजी तो इतने आर्टिस्टों को आसमान पे चढ़ाते थे। If he liked somebody, वो आसमान पे चढ़ा देते थे। तो रोज फोन आते थे, सुधा तू इतना आपने अच्छा गाया, इतने लोग तारीफ कर रहे हैं, ये वो, आसमान पे चढ़ा देते थे। Would you like to remember that song for us? ये तेरा प्यार था या कुछ और था? ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था। इतनी लाइन याद नहीं है आपको कैसे? बहुत शुक्रिया। Sorry for this voice, is terrible today, but नहीं, that's kind of you. I would request friends to switch on the video so that सुधा जी जब चाहें देख सकती हैं कि आप कितने उत्साह से उनको सुन रहे हैं, and how beautifully you are receiving. Yeah, we are definitely having the audio mics muted till the formal interaction is going on, and then we'll move into the second part of the program. Yes. So thank you very much, Sudha ji. Hi, Ranjit. I can see Ranjit there. So that's nice. Some familiar faces. That's good. That's great. Okay. एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हैं आज सुधा जी के इस विशेष कार्यक्रम में। We are welcoming the legendary playback singer, and I would love to refer to her as the queen of ghazals, bhajans and qawwalis, and we owe so much of our
musical Thank you. repertoire to her. मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, ये इस गीत से हमने आज के कार्यक्रम का टाइटल लिया है, अमूल्य टॉक्स That द may I प्रोग्राम. come in also? Can I मैम also प्लीज मैम, talk? I wanted to say that इस गीत के बारे में No, आप because कुछ कहिए. naturally I'm telling my fans, सलामे हसरत कबूल कर लो. क्या बात. You may forget me, but मेरी मोहब्बत कबूल कर लो. So all my loving friends who are so good to me and keep in touch with me, I'm grateful, and that's what I'm saying. सलामे हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो. I love you all. So that's how I wanted to say this, since you captioned it like सलामे हसरत कबूल कर लो. बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत बहुत ही गहरे और बहुत प्यारे बोल हैं इसके, इस गीत के, इस गजल के. और तुम ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो, मेरी परस्तिश की लाज रख, क्या बात, मेरी क्या इबादत कबूल कर लो. मेरी इबादत. क्या साहिर साहब क्या लिखते थे. Hats off to him. No doubt. Amazing. Amazing. मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल कर लो. बहुत शुक्रिया मैम. Shall we go to that another watershed moment when you composed the music for a song? Everybody knows that song. Kindly take us to that moment and how it happened and how did it come by. I really don't know. That's another mystery. ऐसे बस एक दिन पहले हम लोग पता नहीं कहीं स्टूडियो में थे, तो साहिर साहब ने कहा, सुधा जी ये गाना तो कल रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसकी शूटिंग का होगा कुछ टाइमिंग वगैरह. तो अंदत्ता fell ill, he was not able to do anything. He said, can you compose this? I got a surprise. I said, मैं कहाँ, I've not really composed any song. So and he said, no, try, you'll be able to do it. मैं घर लेकर आई, गाने को पढ़ा मैंने, और पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि ये राग पहाड़ी में बनाऊं उसको. तो उसी में गुनगुनाई, पहाड़ी राग में थोड़ा उसका लेकर, एटमॉस्फेयर लेकर उसको उसमें बनाया. और नेक्स्ट डे आई कांट इवन रिमेम्बर हाउ आई डिड इट. कुछ भगवान ने कुछ मेरे को कहा, कर लो कुछ भी. तो नेक्स्ट डे हम लोग आ गए, स्टूडियो में आए, मुकेश को बुलाया, फिर कहा, मैंने कहा मुकेश दा अब गाओ ये साथ में मेरे. क्या बात. और वहीं के वहीं रिहर्सल करी, रिकॉर्डिंग करी, and my fans have loved it. So it's just something I can't. So I can say it's amazing. I can tell you personally, the song has been so close to me, my heart. When I had to visualize and devise the poster for this program, which everybody can see right now, you must have received it. I wanted a line from this song, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है. I wanted this to be the title, पर फिर I think majority prevailed and मेरी मोहब्बत कबूल कर लो has sustained. But I would definitely want to. You wanted that. तो मुझे भूल भी जाओ. अच्छा. I think वो इतना सुना है लोगों ने कि थक गए होंगे सुन के. तो मैंने सोचा कुछ और डाल दो कि और भी पता लगे कुछ गाया है सुधा ने, कुछ और गाने भी गाए हैं. Right? But even at the cost of zillion repetitions, we would still request you कि आप अभी या थोड़ी देर में चाहे हारमोनियम के साथ इस गुनगुना के. Unfortunately, I've chosen a day when I'm not at my best. It's just for us, you'll still be at that level where we can't. Like you're beyond reproach for us. मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको. कैसा रहा? Amazing. This song everybody sings and they sing it very well. जो भी गाता है मेरे लिए बहुत अच्छा गाता है, बहुत ही अच्छे गाता है. And I feel happy. It's a privilege to have you here and listen to you singing live, humming these things. And मैं आप सभी को ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप सुधा जी के पीछे जो दीवार देख रहे हैं, the wall, which is I would say her Hall of Fame, हम वहाँ सुधा जी की पद्मश्री उपाधि, वो सम्मान देख पा रहे हैं.
और बहुत Can you प्यारे see it? Yeah, we can. We all Okay, can. good. Okay, Yeah, that's good. there That's are good. there are collages, I think, of your memories from the journey, and आपके चित्र हैं पीछे, और That's my husband also in right. between. Yeah. And कुछ उनके बारे में हमें बताइए. When oh, you he loved my music. अगर कभी पार्टी में मैं गाती थी और कोई इतनी सी भी आवाज आती थी तो गुस्सा करते थे. Stop, my wife is singing. No, सबको डांटते थे. Is that he is very fond of my singing. अच्छा. And otherwise, he was devoted to his work, Chicago radios and all. Yeah, like of course. But he was fond of music, and he thought I was the best. He thought I was the best. I'm not saying I was the best. क्या बात. So we all second, and we all second him. Thank you. Thank you. It's I would say that your journey, I think you took a decision. That was your decision, but we would have loved to have you with us on that journey. I must tell you, those days life was totally different. ये तो आपको मालूम है, उस जमाने में film line was not at the top level with everybody else. जो लोग पुराने घराने के लोग थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर से लोग film line में जाके गाएं. So that was the restriction kind of a thing, and I appreciated that. But I didn't stop singing. मैंने privately गाए, भजन बहुत गाए. I did shows abroad. सब जगह किया. और आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे खूब गाती रही. हाँ, बहुत गाती थी. तो जब आप प्रेम रोग में लौट के आई तो फिर गिरधर जी की क्या उसके बारे में राय रही? और वो No, he was very happy. He never stopped me from singing. अच्छा. So it was more of your personal decision that you took. I will say more of a family decision. Collective family decision. Elders, let's put it that way. Yeah, and then it's nice of you to have. But everybody, they loved my bhajans. I used to sing a lot of bhajans in the house, so that was not stopped. Only that. Anyway, that's gone and past. So thanks for that, and maybe I'll take you to a few songs. One of them is very close to my heart, which is, मैंने बीच में मेंशन करना भी चाहा था जब मैं आपके को सिंगर्स की बात कर रहा था. किशोर कुमार साहब के साथ आपका जो एक गीत है, आई थिंक वो हम सबके मन में बसा हुआ है, कश्ती का खामोश सफर है. क्या बात. तो उसके साथ तो जरूर कुछ यादें जुड़ी होंगी, क्योंकि किशोर दा के साथ तो it couldn't have been a normal recording, like कैसे? No, it was normal, to tell you honestly. कुछ तो उन्होंने उसमें ऐड किया होगा ना अपनी तरफ से. I think he must have been surprised to see me only, because it was very normal. He didn't say anything. Otherwise, you know how he was. And went off very smoothly. In fact, I thought he might say, because he was very critical also of people singing. But it went off very smoothly. I think he was afraid. Hemant Dada was there. So he was controlling the whole show, it looked like. Right. So, नहीं, बहुत आराम से गाया, बहुत प्यारा गाना है. बहुत बहुत पसंद है गाना. क्या बात. लंदन में मैंने BBC में गाया था. और बहुत ही अच्छा. It's on YouTube. I think everybody must have seen it. It's a beautiful song. उसके and amazing lyrics, and such a gentle song कि आज मुझे कुछ कहना है, and then अंत में छोड़ो अब क्या कहना है. और आप बार बार उनको वज करिए कि कह भी चुको जो कहना है. How lovingly you coming at कह भी चुको जो कहना है, और वो कहते हैं नहीं अब छोड़ो अब क्या कहना है, अब तो संग ही रहना है. I can't say very much about that, because शायर के दिल में क्या होता है वो तो शायर. Right. Like much later, Anand Bakshi comes up with another such kind of song when in Bobby he brings up the situation. है तो राज कपूर की दी हुई situation definitely कि मुझे कुछ कहना है. ऋषि कपूर और कपाड़िया वो भी कह रही मुझे भी कुछ कहना है. पहले तुम. Right. Like how after decades things. Any questions anybody wants to ask? Ma'am, we'll come to that. Before we move over to this, we bring forward the questions which friends have asked in the chat box. I would request that now, because Shivani ने मुझे ये कहा था
I would like to tell everybody that Shivani ji is the force and the person behind this program. Sudha ji ko come and show your face, Shivani. Sudha ji ko is कार्यक्रम में लाने के लिए we are grateful to her. Yes. Thank you very much, Shivani from Mumbai, and she's moved from a home. She sings very well, I must tell you. Yeah, she's good singer. a wonderful person and such a great friend for us. आप सबको ये जरूर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम के लिए हमारे जहाँ चंडीगढ़ में हम हैं वहाँ के मीडिया में भी there's been a lot of excitement. You can see some news reports. Oh, that's nice. जी. I just wanted to discuss चंडीगढ़ के संगीत प्रेमियों के लिए बॉलीवुड की सदाबहार गायिका पद्मश्री सुधा मल्होत्रा से रूबरू होने का मौका आज है और अमूल्य माइंडज़ेन द्वारा प्रस्तुत टॉक शो अमूल्य टॉक्स में अपनी जीवन यात्रा और जीवन के दुर्लभ रोचक किस्से जीवन से जुड़े अनुभवों को सुधा जी साझा करेंगी। संगीत प्रेमी इस शो के जरिए जुड़ सकते हैं जूम पे एंड देन दिस वाज तुम मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको। दिस वाज मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो भूले नहीं है ना मुझे। सुधा मल्होत्रा जी से याद रखता। क्या बात, जिन्होंने इस गीत को अमर बना दिया। धन्यवाद। हमारे दौर की एक लिविंग लेजेंड। ये हमारा सौभाग्य है कि सुधा जी हमारे बीच होंगी इस रविवार। Come, let's meet and greet Sudha Malhotra ji in Amulya Talks and get inspired from the person and her journey. You're most welcome. 5 p.m. this. So Sudha ji, we are welcoming once again towards the end of the show, and the queen of, as I said, ghazals, qawwalis and bhajans also, and singing star of her era. I would say she's been an icon who left an irreplaceable mark in Bollywood with her dulcet voice and such wonderful memories you're carrying. And as we mentioned in the beginning, you're looking gorgeous as ever. Thank you very much for being here, ma'am. These are some pictures you could see. Sudha ji को अलग-अलग moods में, अलग-अलग moments में, and this was when I was young. Thank you. You still are, ma'am. Thank you. And I didn't tell you that I'm also teaching a few students. Yeah, I wanted you to come to that. And Sudha ji, as I know that you've been teaching, you offered that to our audience also. So कुछ हमें उस बारे में भी बताइए कि. But I haven't found anybody who's devoted the way I was to my music. So that's unfortunate. I'm sorry to say. Yeah, ma'am. Learning is a learner's game, and you don't find learners easily. Shivani was one of them. She was very good. But then we parted company for a while. So Shivani still is, and now Shivani will have to, I think, retie the knots. Yes. Anyway, so shukriya. Anybody else wants to talk? Yeah, ma'am. There's another thing I'm talking about. One thing I want to tell you. In London, मेरा एक शो हो रहा था हैदराबाद एसोसिएशन पे, और वहाँ पर एक तो he just catching up, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम. उन्होंने मेरे को अपनी गजल दी कि सुधा जी आप इसको दरबारी में स्टेज इंटरवल में आप इसको दरबारी में बना दीजिए, गाइए स्टेज पे. अच्छा. मेरे खुदा मुझे तो इतना मोहतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे. अच्छा, दरबारी में. मैंने कहा दरबारी तो मुझे मालूम है, क्या करूँ. सच फैक्ट. कैन यू इमेजिन, इतनी ऑडियंस के बीच में गाना पकड़ा हाथ में मैंने, दे दे मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे मेरे. और ऊपर लिया था, अभी तो नीचे गा रही हूँ. So on the spot I made the tune and sang, and it was a hit.
क्या That's बात। another thing I remember. अभी याद आया मुझे। मैम एक मेरी इच्छा है कि शिवानी ने मुझे कहा था that we can see that you are fond of conversations, and that's a privilege, and that you would love to give answers to as many questions. So let's go into not too many, but just not too many, ma'am, but rapid. I like it. Yeah, if I have the answers first. Yeah, we are towards the end of the show. Yeah. And, this is a rapid fire section. I'll be posing some very quick questions to you. These are short ones you could answer in a word or a sentence. Right. So, what inspires you? What inspires me? Yeah. What inspired me or inspires me right now? Both. What inspired you earlier, and what still inspires? Right now, my fans, my friends, my family, everything, my children, my grandchildren. Now I've reached an age, and it's grandchildren, and they inspire me. My granddaughter sings also very well, and my grandson is he plays squash beautifully, and my daughter-in-law was running a magazine. My son is doing his own business. So all these things now, these are the inspirations for me. And music, of course, is there. So, music. But I'd rather listen to it than sing, because I don't have the voice that which I used to have. And that makes me very, very unhappy. So what can I do about that? What's in this life, what's most valuable for you? In this life, my children. Wow, great. And apart from children, what else do you cherish? Now I'm all for fun. I like to have a good time, go out with friends. That's a great answer, ma'am. That's what I do. If we just heard Sabby Merchant talk to me. We're friends. We all love each other. I have a huge love. You play bridge? I play bridge. I have a friend called Valerie Jayakishan. I've got so many good friends. I name them, and they inspire me, all of them. Without them, I would be. Having fun, enjoying life, I think that's one thing we need to learn. We need to learn from you. I think at this age, that's all I can think of. Wonderful. I can't sing the way I used to sing, and that makes me angry. So I said, let it be then. Great. And what's your dream destination? I know you go for vacations, I think, several times a year, but still. Not for the last 3 years. I haven't moved out. COVID has kept us. So that's a lament I'm hearing in your voice. And I got COVID. After 3 vaccinations, I got COVID. That was so terrible. Imagine. That's why I'm the way I am. My voice is not so good. Anyway, that's something you can't do. But anybody can ask questions. I'm game. Ma'am, we'll just reach that, and I'm asking you a few more rapid fire questions. What are your 3 closest memories? Closest memories? Well, my first song in the film line, and I became playback singer, as they call it. Great. Then my marriage to my husband. And my son was born Gaurav Motwani. Wow. Do you lose sleep over anything? Sorry, I didn't get that. Do you lose sleep over anything? Anything? Everything. I'm very sensitive. Very sensitive. Oh my God. So how do you? I'm very sensitive. I pop in pills then to sleep. Oh my God. I mean, doctor, whatever doctor. Prescribed. Yeah. Prescription medicine. So, is there one habit you still want to change within you? Like habit? I don't have any. I'm very touchy, and I have a temper when I'm angry. I'm very angry, but I come down like दूध का उबाल आता है ना, उबाल एकदम पीछे आ जाता है, वैसे होता है. For a minute I'm angry, and then I'm out of it. So moving ahead to another linked question is that this talks about being very emotional or sentimental. What would be your emotional disturbance index? Like getting disturbed, as you said, I'm touchy. So how much does it happen in a typical day, and how do you, after that, how you manage yourself? Well, I think of all the good things I've done in life.
I think of all the good things I've done in life. I think of my friends. I think of my bridge, and then I That's great. take that That's great. phone uthaya, baat kiya, and then it all goes away. So that's a wonderful coping mechanism. And what sense of humor for you? I have a good sense of humor. People have told me that. So I Great. don't know. Great. It comes automatically. I don't know. I mean, I laugh a lot. Great. And good laughter sense. I laugh at good jokes. Mhm. And I can't narrate good jokes, but I enjoy good jokes. Good. And what does passion mean for you? Dressing up right now. Wow. Amazing. So that was one of the best pat I'm answers. sorry. You didn't bat an eyelid. I'm just me. I don't know why I've said that. That's being very honest. Sometimes I feel, why am I dressing up? For whom am I dressing up? I don't know. Then I say for myself. For yourself. God said, I made you, now you look nice. You can't look bad. These are some things we need to learn. You're asking me too many inquisitive questions. I'm getting... Okay, ma'am, could you simplify life for us, maybe in a sentence or two? How do you look at life? I'm a very complicated person, so how do I simplify it for you? For me, I like people around. I like people. I'm a people's person. Great. If I'm alone, I get depressed. So I want to, that's why I have friends. Right. That's why I play bridge. That's why I sing when I have to, listen to music. Great. But I want action all the time. I'm not the type who can sit alone in the room. That's not me. I'm sorry to say, but that's what because I was born like that. That's beautiful. Born in the crowd from the time I was born. I can remember. As a child, I was with people. So I'm a people's person. So which means friends and friendship mean a lot to me. A lot. Wonderful. So what's your bucket list still? Anything? What I haven't done in life? These days bucket list means that what you still want to accomplish or do, like still. No, I just want to, there's nothing to accomplish at this age. What can I do? I can't do anything. I try to help whoever I can as much as I can to my capacity. I feel sorry. If I can do something, I like to come forward and do it. I try my best. The rest is enjoy life and health, look after your health. That's all I can think of at the moment. Any regrets? Any regrets? There are a few regrets which I can't tell you right now. Regrets of my past. But there are. So, one regret is that I should have continued singing. That's a big regret. I think you are echoing our sentiments. Yes, because I didn't realize how well I was singing, to tell you honestly. But when I hear my voice now, I say, oh my God, is this what I sang? यहाँ से लेके वहां तक तान जाती थी ऐसे. क्या बात. कमाल की आवाज भी थी और रियाज भी था और सब कुछ था. Am I right? That's how that's spot on. That's the only regret. But then I had better things. I got married. I got my son. I got family. So that's Ma'am, the last rapid fire question. Okay. Sudha Malhotra in one word. Could you give us? Sudha Malhotra in one word. I want to be born again. If there is a rebirth, as they say, I want to be born as a good singer, a good human being, and a loving person for all. Beautiful. That's amazing to have those candid and such lively answers from you. It's not easy that I guessed I get such a guest every day like you on the show and these questions. I think we all would be delighted. And at this juncture, I would say that we are towards the end of the formal conversation with Sudha Malhotra ji, and there are many questions which our friends have shared with us. They've submitted in the chat box as a direct message, and now I would request that Sudha ji, we move ahead with a few questions. Yeah, very few select questions from the audience. And for the moment, I would be taking it further because that's how the technical team, the coordinating team has
kind of organized it, and after this we will be going into the open house. But एक करके अनिल शर्मा जी एक बहुत प्यारी बात कहना चाहते हैं मैम। वो लोकगीत है जो आपने गाया था, बहुत करीब है मेरे दिल के भी। अनिल जी जी जी, कौन रंग मंगवा कौन रंग मोतिया। अनिल जी प्लीज आप अपने को अनम्यूट करके Can he come? Is he there? अच्छा। अनिल शर्मा जी सर अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। He is speaking, yeah. बस ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता था, बट आई डोंट नो पूरा होगा कि नहीं होगा। कि अगर कौन रंग मुंगवा कौन रंग मोतिया कौन रंग ननदी तोरे बिरना, इतना याद आ रहा है मुझे। और मैम ऑन द सेम रिक्वेस्ट ऑफ अनिल जी, मुकेश जी के साथ जिनकी की एक बहुत ही अर्थी वॉइस थी, उसमें जमीन की मिट्टी की खुशबू थी, उनके साथ इस गीत को गाना क्या कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, दिस वाज अ लता जी एंड नो सुमन एंड आई सॉरी सुमन, हाँ सुमन जी के साथ है, सॉरी, हाँ ये तो सुमन जी के साथ था, आई एम सॉरी। हाँ मुकेश जी के साथ वो दूसरा गीत है, आई एम सॉरी। एक मेरा बहुत ही अच्छा फोक सॉन्ग था जो एचएमए ने करा था, नींबुआ तले डोला रख दिन सा। हाँ हाँ हाँ, दैट्स वर्थ हियरिंग, बहुत ही अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। अभी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। जी जी हम ढूंढते हैं। मैम संगीता गुप्ता जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। संगीता जी वुड यू लाइक टू कम ऑन माइक, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। संगीता जी are privileged to have her here, the daughter of legendary music director मदन मोहन जी। over to you संगीता जी। मैं ये पूछना चाह रही थी भी आपकी शादी किस साल में हुई थी? बिकॉज हम खार से शिफ्ट कर गए थे 1958 में। हाँ 60 में हुई थी। इसलिए मुझे आपके साथ इतनी यादें नहीं जुड़ी हुई, बिकॉज हम वहां से मूव कर गए थे तब तक। आई वॉज लिटिल क्यूरियस अबाउट दैट। But you were invited, weren't you? Yes, of course we were invited, definitely. But we were not living across the road. Right, that's right. We had moved to Makani Manor by then, right. to Pedder Road. But क्योंकि उससे पहले हम मेरा घर में बहुत आना जाना था till we lived there. Yeah. तो बस यही मैं जानकारी लेना चाह रही थी कि आपकी शादी किस साल में हुई? 60. And it has been a wonderful evening. So great to see you talking and looking as glamorous. And I always thought you were so beautiful. And you still are. Thank you, Sangeeta. You made my day. Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू संगीता जी, थैंक यू अनिल जी। और ये कई हमारे साथी जरूर ये कुछ कहना तो चाहेंगे हाउ दे फेल्ट, बट उससे पहले सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच they wanted to ask, maybe most of them have been asked unwittingly by me in the process, but चंद्रमोहन जी जरूर एक आपके उसी गीत के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आर यू देयर सर? वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इफ यू कैन रेज योर हैंड देन योर थंबनेल देन कम्स इन द। जी चंद्रमोहन जी प्लीज सर बोलिए। जी मैडम, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस इन दिस इवनिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो दीदी फिल्म का गीत है, तुम मुझे भूल भी जाओ, ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, इस फिल्म में बेसिकली एन दत्ता जी म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। लेकिन आपने उस फिल्म में म्यूजिक दिया, ये क्या स्टोरी थी? मैं ये जानना चाहता था जी। मैंने इस स्टोरी को बहुत ही दफा रिपीट किया, लेकिन आपको सुना दूं आप, क्योंकि जो म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और ये गाना पिक्चराइज करने के लिए डेट तैयार थी, तो सॉन्ग हैड टू बी रिकॉर्डेड। So Sahir Sahab gave me the lyrics, said try and do something about it. और भगवान ने कहाँ से मेरे को अक्ल दी, तो वो गाना मैंने रात में बनाया, अगले दिन रिकॉर्ड किया, and it turned out to be a hit. So that's a memorable story which I'll never forget. और ये गाना
ये गाना it is very close to my heart और I have been singing on stages Oh, that's in my great. voice. That's great. जैसे एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर सुनाइए। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। वाह वाह, बहुत अच्छे। I'm happy to hear. I'm so happy that you sang this song. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गणेश, थैंक यू चंद्रमोहन आभार जी। आपका। गणेश दत्त जी, आप जो पूछना चाह रहे थे वो I have touched upon that, but फिर भी आप प्लीज if you would like. I'm glad he sang. I'm glad he sang the song. थैंक यू चंद्रमोहन जी। सुधा जी ये कह रहे हैं कि इतनी अच्छी बात है आपने गाया, बहुत शुक्रिया। गणेश जी बहुत धन्यवाद अमूल्य जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ऐसी हस्ती से हमें मिलवाया। लेकिन मनुष्य वही पूछता है जो उसके मन में चलता रहता है। उस लिहाज से मैं उनके आध्यात्म पक्ष के बारे में जानना चाहता हूँ। What is that? Adhyatmic spirituality. The spiritual side of yours. I have some, I must tell you, हम मोटवानी के यहाँ हमारे हर संडे को भजन हुआ करते हैं। क्या बात थे? कम से कम 70-75 साल से लगातार। Nothing stopped those bhajans. We used to have that. And all these people, Manada, Om Sharan, Anup Jaluta ji, हम सब ने यहाँ पर भजन गाए हैं। और ये भजन जब हम लोग करते थे, जिस दिन मेरा भजन अच्छा होता था, I felt I'm with God, which is a fact. The day I sang a good bhajan, which I thought is from my heart, I really felt those moments when I sang those bhajans. Okay. That's how far I could have gone. Wow. I would have wanted to do that more often, but वो ऐसे चांस होता था कि मुझे लगता था ये आज मैं पहुंची हूँ भगवान के पास। वो आपका भजन बहुत है ना, क्या गाते हैं? दर्शन तो निशान। और दूसरा भी जो प्राइवेट है ना। हाँ, मैंने किया द्वारिका बासरे, रणछोड़ जी के मंदिर। हाँ, भजन तो बहुत है, बहुत भजन है। सालों तक गाए मैंने, बहुत भजन गाए। जितने थैंक्स फॉर दिस। और बहुत जल्दी से आपने मराठी में भी बहुत कुछ दखल रहा है, आपका गाने गाए हैं, तो मराठी आपको आती है? वो भी देखिए ना, क्या भगवान की माया। मैंने जो गाया भजन मराठी में, गाना का जो गाया एचएमए में, it's become like a national anthem. सब महाराष्ट्र लोगों को मालूम है। They all love that song and they didn't think कि मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ। इसे सुधा मल्होत्रा महाराष्ट्र कैसे? और बिल्कुल अच्छी तरह मेरे को बड़े अच्छे डायरेक्टर्स मिले जो मुझे सिखा सकते थे कि क्या एक्सेंट होना चाहिए, क्या उसका तखल्लुस क्या होना चाहिए, जो बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। So that helped me a lot. और उसमें कोई गलती नहीं हुई और became a real hit. शुक्र तारा मन दोबारा। नहीं बस अगर आप हारमोनियम के साथ कुछ नहीं, अब बस हो गया। So we are grateful to you for this. We will end these formal questions from the audience, and I would just formally take things further. For today's program, we are grateful. The credits we would like to share that the background work and whatever has been done by yours truly, and presenting it and moderating it. The aesthetics and coordination is by Neha, and technical support by Ananya. Special thanks to Shivani Gupta Agarwal, and special thanks for platform support to Vinay Johar, and for public relations to PK Khurana ji. We are very grateful to all of you for making this happen, for this new approach to our Sunday Baithak, Amulya Talks under Amulya MINDZen. So this was an Amulya MINDZen presentation, and I would take you to the same feeling which we could create in the beginning of the program when I was introducing Sudha ji, and I recalled Ibn Insha, and I recalled
फिराक गोरखपुरी, हर शक्ल का रूप नहीं होता, हर रूप को नाम नहीं देते, कुछ शक्लें हैं मन की आंखों में, कुछ रूप है मन के दर्पण में, कुछ मन के अजंता में आओ, वो मूर्तें तुमको दिखलाएं, वो सूरतें तुमको दिखलाएं, हम खो गए जिनके दर्शन में। आज सुधा जी हमारे पास चल के आ गई हैं, अब इसको क्या कहें, कुआं प्यासे के पास आ गया है। सो वी आर सो ग्रेटफुल। और फिराक साहब को याद करते हुए आई जस्ट रिपीट बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल, आई डेडिकेट इट टू सुधा जी whom I've seen living this way। हम वक्त के सीने में एक शम्मा जला जाएं, सोई हुई राहों के जर्रों को जगा जाएं, कुछ रंग उड़ा जाएं, कुछ रंग जमा जाएं, इस दश्त को नगमों से गुलजार बना जाएं, जो सुधा जी ने किया जीवन में। इस दश्त को नगमों से गुलजार बना जाएं, जिस सिमत से गुजरे हम कुछ फूल खिला जाएं, जिस सिमत से गुजरे हम कुछ फूल खिला जाएं। So thank you for making lives so beautiful, ma'am. I'll just request you that kindly stay. We are just stopping the live streaming and the formal program here. We are grateful to you, Sudha ji, and all our audience here on Zoom, on Facebook Live, and on YouTube also, who will be listening to it on YouTube, our channel later on. I would love to mention that we've been conducting the Sunday show every Sunday. Those of you who are new, who joined us today, you may kindly write to us in the chat box. You may give us your number, or you may give us your coordinates, and we would include you in our mailing list. With that, we are formally ending today's show. Just something I want to say before we close the program. Yeah, please. Sudhaji is a wonderful human being. She is such a loving human being that it's she when you meet her, she has no airs. She will never make you feel that she's a celebrity. She's all love. She's all care. And also, one thing which I have been telling her is that she should compose more, because her extempore, whatever she's composed is so beautiful, and I've always been telling her, please compose more. I don't mind teaching also. And she loves to teach, she loves to share, which is a beautiful thing, to be able to share what you have with others. That's amazing. So she's a great human being, and I want to सलाम हसरत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मैं इस मौके पे, इस मंजर पे, उस मौजू पे ये कहना चाहूंगा कि फॉर्मली हम आज के शो को तो समाप्त कर रहे हैं, बट सुधा जी से ये निवेदन करेंगे कि अगर वो हमें अपना थोड़ा सा कीमती वक्त और दे दें, तो अब हम एक ओपन हाउस बैठक में जाएंगे। यानी कि अब हमारे कोई भी साथी विल बी अनम्यूटिंग, लाइक गिविंग यू द कमांड टू अनम्यूट योर माइक्स, द टेक्निकल कमांड, एंड आप इतना करें कि एक छोटे से 1 मिनट में या 30 सेकंड में जो कुछ भी आप सुधा जी के लिए कहना चाहते हैं, सवाल तो हो चुके, बट आप जो अप्रिशिएटिवली कहना चाहते हैं वो जरूर कह दें। आई थिंक दैट विल बी समथिंग व्हिच सुधा जी विल चेरिश फ्रॉम टुडेज प्रोग्राम। सो विद दैट we are now changing the microphone settings, and one by one, kindly raise your hand so that I can invite you to speak. Kindly raise your hands. आप कुछ तो कहिए, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, सुधा जी से बात करके कैसा लगा। बस एक निवेदन है कि कार्यक्रम की गरिमा को और अपनी बात को उस पादान पे ही रखें। अब सवाल मत पूछिएगा प्लीज, अब सवाल नहीं। आप सीखना चाहते हैं, सुधा जी से बात कीजिए। आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, प्लीज अप्रिशिएट। यू आर ग्रेटफुल, प्लीज एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, बट अब सवाल मत पूछिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू। इंदु जी, ओवर टू यू विद द रिक्वेस्ट दैट काइंडली you wanted to learn, आप बोल सकती हैं प्लीज। First of all, I want to thank you for organizing such program. And Sudha ji, I just was looking forward to see and listen to her, because I have been listening her interviews wherever it was possible. If she recalls, her interview was there on Vivid Bharati, which I really enjoyed like anything. Ma'am, you remember your interview was there on Vivid Bharati? It was so wonderful, and I just was tempting to talk to you because I wasn't getting the chance. I'm sorry to say like that. Your songs are related to my real life.
my husband's name is Mukesh, and just now somebody was saying about that song, "To Mujhe Bhool Bhi Jao." Ours was love marriage. So in between that time before marriage, he was busy. So I just used to sing this song. तुमको दुनिया से के गमो दर्द से फुर्सत ना सही, मुझसे उल्फत ना सही. So like that, you are in my part of my life, and even Sudhasi's bhajan you have sung, and my husband had brought that cassette, and Thank you, ma'am. after that, if you remember that time, that cassette used to be there. So we used to listen, and he had gifted that cassette to everyone because everyone liked those bhajans. And after that, we stopped listening. I mean, using those tape recorders. We were listening on the Akashvani Vivid Bharati. And I even talked to Kamal Sharma ji, who had taken your interview, because of late they stopped playing those bhajan. And my husband was desperate to listen those you bhajans. might find them on YouTube. Now, ma'am, unfortunately, I lost my husband, and now I was searching on YouTube some few days before only. I was so much happy that I could listen to those bhajans, but I became emotional because now he's not there. He just wanted to listen those bhajans. I'm sorry. But bhajans so emotional हो ही जाते हैं because it touches your heart. वो भजन बहुत अच्छे जो सूरदास जी के आपने गाए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. थैंक यू वेरी मच. और आप जो बोल रही हैं कि क्लासेस लगाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर आप अमूल्य जी को बता दें कि क्लासेस कैसे और कब होगी. आपके सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं. आप बहुत लकी हैं कि गोल्डन एरा से आप हैं. आपके तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बुक लिखिए जिसमें आप सारे एनेक्डोट्स लिखेंगी. आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स एवरीवन फॉर गिविंग मी द चांस. थैंक यू. Thank you, Induji, and thanks to other friends who are here. And I think I've given them no choice because I've told everything. Yeah, I know. तो मैंने इसीलिए बोला है कि अब कोई एंड लाइक मैं ये देख रहा हूँ किसी टेक्निकल रीजन की वजह से फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग अभी तक ऑन है. सो आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू थैंक लाइक टू वी आर थैंकिंग एवरीबॉडी ऑन फेसबुक एंड काइंडली स्टॉप द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन फेसबुक. And we thank Sudha ji once again, and we are here now for the informal